Hi, and a very good afternoon to all of you. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. This is Arushi over here, and today we are going to discuss a very important issue that is a very important achievement for the Indian economy. That is, India overtakes the United Kingdoms to become the fifth largest economy of the world. कितना बड़ा इशू है, क्या सिग्निफिकेंस है इस इशू की, क्या वाकई में ये एक अचीवमेंट है या फिर एक सुपरफिशियल लेवल पे है, चलिए इसके बारे में कुछ एनालाइज करते हैं. बट बिफोर वी एनालाइज डीप मोर अबाउट द इशू, लेट मी इन्फॉर्म यू, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल ने एक इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया है फॉर ऑल द आरबीआई ग्रेड बी एस्पायरेंट्स. जस्ट अ सेकेंड. Yes. So if you are interested in preparing for RBI Grade B examination, अगर आप लोग interested हो prepare करने में, तो फिर उसका एक separate course हम लोगों ने launch किया है जो कि 15th of September से start हो जाएगा. So do stay tuned to Adda 24/7 and yes, we also have an offer going on. इसमें आपको holistic training दी जाएगी for both the phases, that is phase 1 as well as the phase 2. Holistic training दी जाएगी, and for that we have a 77% off available to all of you guys. आप कोड यूज कर सकते हो, Y580 कोड यूज करोगे तो उस पर आपको 77% ऑफ मिल जाएगा. 3200 रुपीज में आप आरबीआई ग्रेड बी के बोथ द phases, that is phase 1 as well as phase 2 परचेज कर सकोगे. If you download this course from the app, you will get an additional discount of 100 to 200 rupees. Okay, so now without wasting much time, let me begin with the session for today. The interesting most... okay, yes. Okay, let's begin with today's session about the Indian economy becoming the fifth largest economy in the world, overtaking the UK. United Kingdom का जो economy है उसको overtake करके India has grown to become the fifth largest economy. क्या significance है इसका, क्यों ये इतना important है, क्या ये वाकई में एक achievement है कि नहीं. So let us first understand कि मुद्दा क्या है. See, top 5 economies being US, China, Germany, US, China, Germany, Japan and now India. UK is the 6th largest. एक कंट्री जिसने 200 साल तक इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रूल किया, इकोनॉमिक ड्रेन किया, हमारी कंट्री को इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ड्रेन कर दिया that by the time we got independent in 1947, our GDP growth rate was in a very dismal state of affairs, right? The golden bird of the world in the world economy was reduced to an economy that was dependent on countries like US for the supply of food grains. Yes, famine जैसी प्रॉब्लम, लो रेट ऑफ जीडीपी जैसी प्रॉब्लम से हम लोग इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमारी इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ अचीव कर लिया है, कितने इंपॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट्स अचीव किए हैं, राइट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, देन द सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंडस्ट्री बबल बर्स्ट, देन अगेन अ गोल्डन एरा ऑफ 2004 and 5. 2008 and 9 के रिसेशन को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया. वी वर वेरी रेजिलियंट. एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ 2011-12 में, 2015-16 में. एंड बोथ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज द वर्ल्ड बैंक एज वेल एज द IMF, कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी एज द ब्राइट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड. In today's time, 2022 में, we are clocking a GDP growth rate of 6 to 6.5% and a GDP growth rate of 6 to 6.5% in time like this, in a post-pandemic era like this, in an era जहाँ पे UK और यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस एस्केलेट कर रहा है. इस टाइम पे एक हाई जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करना, इट इज एक्चुअली अ न्यू नॉर्मल. It is a new normal and we as an economy have been successful to achieve that. तो लेट अस अंडरस्टैंड किन पैरामीटर्स में इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली सब्सटैंशियल सक्सेस हम लोगों ने एक्चुअली में अचीव किया है, एंड कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पे हम लोगों को थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है. यू ऑल मस्ट बी अवेयर. गुड आफ्टरनून मनीष, मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन. यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट
that Human Development Index, Human Development Reports Office of UNDP ने अभी पब्लिश किया, एंड रिसेंटली हम लोगों को ये पता चला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक था, दैट saw a decline. Last year, Indian economy's rank in HDI was 131, and this year Indian economy's rank in HDI was 132. क्यों आया ये decline? Why did we face this decline? The main reason cited for the decline is a lowering of life expectancy at birth to 67 years only because of pandemic, because of infectious diseases, right? That is the main reason. But let us understand what is the new milestone that we have achieved. We have overtaken the UK economy. Indian economy का जो overall size है, that is $854 billion. The total size of Indian economy is $854 billion as against the size of UK economy. UK की जो economy का size है, that is $817 billion. So this is an achievement. Overall economic growth में overall economy का जो size है, that is increased to $854 billion, which is higher than that of the UK economy size. अगर हम लोग current nominal GDP की बात करें, what is the nominal GDP for the Indian economy? At the present prices, it is rupees 232. Rupees 232.15 trillion dollars. रुपीज 232.15 ट्रिलियन डॉलर्स हमारी इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी है, राइट? एंड नॉट ओनली दैट, वी आर द टॉप 3 हॉटस्पॉट ऑफ द यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड. यूनिकॉर्न्स मतलब ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है मोर देन $1 billion. Value in the sense annual turnover is more than $1 billion. Those are the unicorn startups, and we are all aware of the Hurun India Index that states that सबसे ज़्यादा unicorn startups are there in Bengaluru. But overall अगर हम लोग global cross country analysis अगर देखें तो India stands at third rank after the US and China to have more number of unicorn startups in its economy. That is more than 100 unicorn startups in the economy, valuing more than approximately or almost rupees 300 US billion dollars से भी ज़्यादा unicorn startups है हमारी economy में. So that is a big win. And of course, to add to this GDP of $232 trillion, we have also seen an increase in investments in the renewable energy sector. Renewable energy sector में investments increase हुए हैं, and yes, because of that also Indian economy has seen an increased 40%. हमारा target है to source 40% of our energy from non-fossil fuel sources. Another most important thing is that 2070 tak we aim to achieve carbon neutrality, and I don't see a reason why that cannot happen, because we have signed a lot of MOUs with private organizations, MOUs with different countries to secure us the supply of raw materials that will enable us to manufacture more electronic vehicles, that will enable us to produce more hydrogen fuel. So yes, all these, this is the Indian economy of the new era, okay? The Indian economy that is focusing on renewable energy, focusing on startups, facilitating the growth of women-led startups led by minorities. We have also seen an increase, a multifold jump in agricultural exports. We have also seen northeastern states भी काफी सारी countries को agriculture exports कर रहा है, and that has also seen a jump. All right. GDP per capita की अगर बात करी जाए, what do you understand by GDP per capita? According to the Human Development Index report के अकॉर्डिंग हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम जो है, दैट टर्न्स आउट टू बी $6,590 billion US dollar is our per capita national income.
or say you can say per capita income. Now per capita income has seen a jump of almost 500 times than what it was at the time of independence. All right. Now talking about health may we have increased our universal coverage to a multiple time. We have Atmanirbhar Bharat ke andar we have Ayushman Bharat scheme, Ayushman Health Mission, right? Of course, the budgetary spending on health has also increased to rupees 86,000 crore approximately, right? Not approximately, but almost. Poverty, talking about poverty, so yes, there we have faced a setback as far as poverty is concerned, and that too because of the lockdown, because of the COVID-19 virus, right? In the pre-COVID era, we managed to cut down the poverty rate by more than 10% than what it was in 2011. That was the highest decadal reduction in the rate of poverty overall in the economy. So can we really say that the economic growth that Indian economy has witnessed over the years, and the fact that Indian economy has grown to be the 5th largest economy in the world, उसका क्या कोई trickle down effect है? लास्ट माइल ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिला है क्या? तो हाँ, कह सकते हैं काफी सारे पैरामीटर्स में देखने को मिला है. अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखेंगे, अगर हम लोग एजुकेशनल रेट एंड लिटरेसी रेट को देखेंगे, तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि मांडला डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला ऐसा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसने 100% फंक्शनल लिटरेसी अचीव करी है. वी आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. So we can say that Indian economy is not only going economic growth, but it is also witnessing a large scale significant economic development. There is a difference between economic growth and economic development. Economic growth क्या होता है यार? क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ? ईयर ऑन ईयर जीडीपी इंक्रीज होता है, दैट इज इट. ईयर ऑन ईयर जीडीपी इंक्रीज का मतलब कि नॉमिनल जीडीपी इंडियन इकोनॉमी का जो 2021 में था एंड नॉमिनल जीडीपी 2022 में जो भी इंडियन इकोनॉमी का था, उसमें कितना ग्रोथ देखने को मिला है? दैट इज ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ. ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट इन जीडीपी, क्वार्टरली असेसमेंट देख लो, हाफ ईयरली असेसमेंट देख लो, ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देख लो. When we talk about economic development is the main issue here, and that assesses the trickle-down effect of economic growth. Right? Economic development is much more important क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि जो इकोनॉमी ग्रो करी है, क्या उसका बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ अदर सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, क्या उसका लास्ट माइल सर्विसेज, उसकी लास्ट माइल बेनिफिट लोगों तक पहुंच भी पा रहा है कि नहीं? That is the main concern of economic development. And now we will see एक थोड़ा सा एक brief overview ले लेते हैं हर पैरामीटर का, to assess and see that where are we lagging and what is the way forward, and what are the commendable achievements that we should promote and encourage for the near future. Okay, so let's just begin with analyzing the size of the economy. तो GDP का size, as we all know, Indian economy का GDP, nominal GDP जिसको कह रहे हैं, जिसमें कि price rise, inflationary price rise included रहता है. Real GDP आपको base effect से calculate करना पड़ता है by using the GDP deflator value. That will give us the value of real GDP. Real GDP में जो inflationary price rise का effect होता है, वो हटा के हम लोगों को एक्चुअल में जीडीपी का वैल्यू पता चलता है, राइट. बट लेट अस जस्ट फोकस ऑन नॉमिनल जीडीपी. अभी नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 232.15 ट्रिलियन डॉलर्स. This is the size of Indian economy. So now this is quite an achievement for us. This is an achievement. Yes, we already have more than 100 unicorn startups. We have already seen that. तो कैश टर्म्स में जीडीपी इंक्रीज हुआ है, एंड दैट हैज पुश्ड द इंडियन इकोनॉमी अहेड ऑफ द यूके इकोनॉमी विद अ साइज ऑफ $854 billion. ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन की अगर बात करें तो, बट अगेन let us just focus here for a while. यहाँ पे GDP growth rate needs to be supplemented by an equivalent increase in employment. Rate of employment हमारी इंडियन इकोनॉमी को increase करना पड़ेगा. It needs to grow by at least 1.5% per annum.
by 2023. जो हमारी कंट्री में प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट रेट है, इट नीड्स टू इंक्रीज, इट नीड्स टू ग्रो बाय एटलीस्ट 1.5% per annum by 2023, so that we can achieve a GDP growth rate of 8 to 8.5% by 2024. 2030 तक एटलीस्ट 8 से 8.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम लोगों को चाहिए, तो हमारा एनुअल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द मैकेंजीज इंटरनेशनल रिपोर्ट इट शुड बी 1.5% per annum. The fact is that this is also very, very important because we also aim the Indian economy to achieve a size of $5 trillion by 2024. And I don't see us very far behind the target if we successfully achieve the target of $1.5 billion economic growth by 2023. Right. So this is what it is all about. Current account deficit, rupee depreciation are some of the other issues or some of the other measures that we need to take into account, that we need to account for. Aided recovery when all the other growth engines, they have lost steam. We need a sectoral parity as far as economic growth is concerned. Agriculture, manufacturing and services, तीनों में ही हम लोगों को ग्रोथ प्रमोट करनी चाहिए. एंड फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए वी ऑलरेडी हैव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स वेल इन प्लेस. Okay, so now that we have talked at length about, just a second, we have talked at length about the size of the economy. Coming down to population की अगर बात करी जाए तो what is the trajectory? See, UN World Population Report के according next year ही we will see an increase of population by 140 million people. 140 million people will be added to the population of our country, and then we will surpass China to be the most populous country in the world. Is this an achievement? It depends on how well we utilize our demographic dividend. अपना demographic dividend हम लोग कितने अच्छे से उसको utilize करते हैं वो उसके ऊपर depend करता है. तो अभी अगर इंडिया का average age देखें, it remains to be around 27 to 28 years, which is very younger. It is very much younger than the average age of most of the advanced economies like the US, UK or Japan. But the thing is that that demographic dividend will be dividend if it is complemented by suitable employment opportunities, if it is complemented by growth opportunities. ये सारी चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि यार हाउ मच आर वी एबल टू यूटिलाइज एंड बेटर आर डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो देर इज अ 4 टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज. 1947 में हमारा कंट्री का पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ था, एंड नाउ वी आर going to grow by 150 crore. We will reach a population growth rate of 150 crore by 2030. 2030 तक 150 करोड़ यानी कि 1.5 billion will be our India's population that will grow to 166 by 2050. 2050 का UN population projection क्या कहता है? UN population projection के according 2050 तक world का जो population होगा that will be 9 billion people, of which 166, that is 1.6 billion people will be from India alone. Okay, now it is very important for us to utilize this demographic dividend very well. We need to understand, we need to address the issues on a multidimensional perspective. Multidimensional poverty, sustainable development goals, illiteracy, healthcare, इन सारे issues को address करना अब हमारी economy के लिए और भी ज़्यादा important हो गया. Now that according to the National Family Health Survey report 5 report, we have a total fertility rate. जो total fertility rate का national average है that is 2.1, right? जिसमें urban rate है 1.6 and rural fertility rate is around 2. So we are reaching on a stabilizing position. Population management is also very, very important, and we are reaching a more stable time, much more stable time when it comes to population management in the context of total fertility rate. Right.
सो यस, बट अकॉर्डिंग टू एच डी आई के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें गिराव आया है. उसमें वी हैव सीन अ डाउनफॉल फ्रॉम 72 years लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लास्ट ईयर. अब वो 67 हो गया है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेल्थ पैंडमिक एंड spreading of infectious diseases all across the country. Now talking about poverty, extreme poverty India में it dropped to 10.2% of the total population in the pre-COVID era. अगर 2011 में हमारी country का poverty rate was 22%, then we can safely say that 2019, लेट इज इग्नोर द ईयर 2020 बिकॉज वहां पे फिर लॉकडाउन भी आया, माइग्रेंट वर्कर्स का क्राइसिस भी आया, काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, पॉवर्टी रेट में ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ही होगा. राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि जितनी भी कंट्रीज ने एफर्ट्स किए थे टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेट एंड दे वर एक्चुअली गेटिंग सक्सेसफुल इन द प्री कोविड टाइम. 2019 बार ईयर लेके चलते हैं, they were pushed 4-5 years back in their targets because of the lockdown imposed by the pandemic. So obviously Indian economy is no alien to that. We will also be equally significantly affected. बट स्टिल वी कैन सी कि डेकेटल ग्रोथ रेट इंक्रीज को अगर देखा जाए तो 2011 में 22% पॉवर्टी रेट था, वही पॉवर्टी रेट कम हो गया है 2019 में. 2019 में our poverty, the present poverty rate is 10.2%. Right, this was increased a little by 2022. 2022 तक ये पॉवर्टी रेट में 11.6% इंक्रीज हो गया था. सो यस, द पैंडेमिक डिड हैव एन इम्पैक्ट, डिड पुश आवर एफर्ट्स बैक एंड 2 percentage points से बेसिकली इंक्रीज आया है हमारे टोटल पॉवर्टी रेट में एज अ पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन. Right, but still our efforts are going on. We still have poverty alleviation programs, skill development programs that aims to remove poverty in the rural and the urban youth. So इस aspect में we still need to work and we still need to create a parity on a regional level. Regional level पे जो growth dynamics है उसमें भी parity include करना, introduce करना ज़्यादा ज़रूरी है. Now let us talk about GDP per capita. GDP per capita की बात करें तो 2001 में GDP per capita was 18,667. Now as far as 2022-2021 का जो economic survey है, we have seen actually 1,000 times jump. 1,000 times jump in per capita GDP from independence till now, and a 7 times jump in per capita GDP since 2001 to 2021. Alright, तो बेसिक पर कैपिटा जीडीपी में भी इंक्रीज आया है. इट स्टूड टू बी अराउंड, इट इंक्रीज्ड to rupees 1,28,000 in 2022 to 2021, which is a very very significant achievement as far as the Indian economy is concerned. But still we need to fare better. This is actually the rate of jump in per capita GDP. 60,000 था in 2011 and in 2011 that has grown to increase more than 1,28,000 per capita GDP for 2020-2021. All right. Moving on to the next slide, we have, let us talk about health, universal health coverage. Universal health coverage में we have performed exceptionally well. We are almost closing the gap with the United Kingdoms as far as universal health coverage is concerned by schemes like Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, making health affordable to everyone, reducing the out-of-pocket expenditure as far as health issues are concerned. गुड आफ्टरनून मैम. तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन रिड्यूसिंग द inequity and disparity when it comes to access to healthcare services. Now talking about the budgetary expenditure के terms में भी our total budgetary expenditure as a part of health has increased to more than rupees 86,500 crore.
86,500 करोड़ से भी ज़्यादा बजटरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है हमारी इकोनॉमी में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सुरक्षा बीमा योजना, ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड अ क्रिटिकल crucial role in universalizing the access of healthcare services to the people. All right. Human Development Index में we have already seen a performance. See, last year हमारा Human Development Index was 0.654, but now our Human Development Index has reduced to 0.633. Now that is because of a lower life expectancy at birth now. What is the present outlook? अगर हम लोग present outlook की अब बात करें तो present outlook का के context में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो rapid economic growth है over the past 25 years, it has seen a downslide. It has seen a downslide in the value of pound over the past 12 months. India's growth, सी कोविड-19 के बाद से हम लोगों ने देखा था काफ़ी बार आरबीआई के सर्कुलर्स में भी ये पब्लिश हुआ था कि अर्बन एंड रूरल कंजम्पशन डिमांड इन टर्म्स ऑफ बोथ डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज द इम्पोर्टेड डिमांड, दोनों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। What does it mean? It basically means कि जो इनकम लेवल है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया था और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो जंप देखने को मिला है आफ्टर कोविड-19, दैट वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज व्हेन दे वर स्ट्रगलिंग, इंडियन इकोनॉमी विटनेस्ड अ जंप. Indian economy has witnessed a significant jump. So present policy perspective क्या है हमारी इकोनॉमी का? प्रेजेंट पॉलिसी पर्सपेक्टिव है 2024 तक $5 ट्रिलियन डॉलर का साइज अचीव करना. We aim to become a $5 trillion economy by the year 2024. कैसे होगा वो? How will it happen? Sectoral growth में we need parity and the growth trajectory should be more export oriented. How did China become the manufacturing hub of the world? India should do the same. I'm not saying that we should copy China, but we should strategically invest and encourage sectors in which we have our comparative advantage as far as exports are concerned. तो इस context में भी we can definitely become a $5 trillion economy. We need to clock a annual GDP growth rate of 8 to 8.5%. That has to be complemented by an increase in employment opportunity by 1.5% per annum. All right, so what are the issues related to the Indian economy? Despite all the measures to upgrade the agriculture infrastructure, the farmer still depends on monsoon, and we need agriculture to be more climate resilient today. Climate resilient agriculture is the need of the hour as far as the Indian agriculture is concerned, because we cannot continue depending on the monsoon just for an increase in the output. Right. And then of course import dependency हम लोग जहाँ तक कम कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता हम लोग जिस एक्सटेंट तक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए. राइजिंग इन्फ्लेशन, we need to control, we need to tame inflation. तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो इंडियन इकोनॉमी सेट करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सेट करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दैट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 2 to 6%. दैट हैज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड. पहले वो इन्फ्लेशन टारगेट का जो रेट था दैट वाज सेट बिटवीन द रेंज ऑफ 2 to 6% बिटवीन 2016 and 2021. नाउ दैट हैज बीन एक्सटेंडेड फर्दर टिल 2026. Okay, so this was it. I hope आपको एक multi-dimensional approach, multi-dimensional perspective पता चला होगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में. This is how we can definitely achieve our $5 trillion economy target. Let us go step by step. Let us address and cater to the issues on a multi-dimensional basis with proper inter-ministerial and cooperation and state government coordination. राइट, यहाँ पे पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट, इकोनॉमिक प्रूडेंसी सारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से
होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Thank you so much for watching. I hope you had a great session and got a fine insight on the status of the Indian economy. Thank you so much. See you in the next session. Take care and bye-bye.